First, let me share my screen. Okay, here, and this is our SQL prompt. And as I told you before, that we can work with MySQL Workbench as well. If you want things to be more visually appealing, then you can use the Workbench. Here you have a little bit of GUI advantage, like code completion and all these things are available here. So no problem. So we will be doing the joins. सबसे पहले ऐसा करता हूँ कि कुछ joins को मैं repeat कर देता हूँ. Then some of the type of the joins that has not be done before उसको करूँगा. ठीक है? So the first and foremost type of join was inner join. Yeah, I hope everyone remember. The first and foremost type of join is inner join, where two or more table can be joined having the a column that is common that will be used, and only those rows will be shown that has a corresponding value in the other values, other table. Just like select test, just a minute. Select asterisk from just say taking few things. Just uh, you have the query here. Select this from a, just take the simplest of the query that we have learned. Yeah, this is the simplest query. I'm just repeating. Select ename, job, dname, location from employee department, where employee dot department number is equal to department dot department number. This is inner join. This is a very simple type of syntax. But there is one more syntax that I was talking about. This is this ANSI syntax that is available everywhere. Okay, so in that case, how we are going to do the join using the ANSI syntax. So you see, same code, same output, but the syntax will be a little different. So select whatever you are taking it from EMP. पहला टेबल का नाम हमने दिया, ठीक है, and write inner join and give the name of the second table. The second table is deputy. Now give the on keyword, and after that put the criteria. So what the criteria is, emp dot dptno is equal to dpt dot dptno. So you have the same query here, but the syntax is different. Previous syntax was a plain syntax, and this is considered to, it is called the ANSI syntax, and this syntax is available in all the databases, all the database products, whether it is Oracle, whether it is MySQL or SQL Server, or whatever the product you will be using, this syntax will always be there. Okay, so so what is the difference between this syntax of all those products that I have just mentioned? The SQL it's same. The SQL it's same, but the admin commands like the DBA commands, creating database and creating users, freezing user, altering database, those may be different. But the SQL, so in a nutshell, you can say that the query to manipulate the table. So query to work with the table will be same, Little bit of difference, like one or two data type may not be here or there, or in a different way, just like date data type is little different. The format is little different, and function may be different, but there will be this function for doing the same thing in each database, but maybe
The name of the function or the little bit of syntax may be different, but they all will be different. Like finding the string function, like finding the length of the string, doing uppercase, lowercase. They all are same, almost same, available on all the databases, but the syntax may be different. So in a nutshell, I will repeat that the SQL is same, little bit of difference may be there, but the main difference is there in the administrative commands. There will be difference in the different databases. So if you learn one database, then working with the other database will be very much easy. You will be have no not much problem in working with the other databases. Okay. So next, I was talking about the uh, commands to join, syntax to join. So this was the inner join. So and after the next join that we were talking about is cross join. Okay, I will talking about the cross join. Cross join, where you have to do the difference. You have to do the difference here. Instead of inner, use cross. Okay. If I run, you will be surprised. Same output. Okay. So what is actual the cross join is this, that you don't give the this joining criteria, and this is the real cross join. How many rows are there? 56. From where this 56 came? It is 14 into 4. Remember, there are 14 rows in EMP and 4 rows in the DPT. So what is actually happening here, that every employee is being seen in every department. So that's come the 14 into 4, 56 rows. How come? This is cross join. It is also called the Cartesian product. Okay, it is called the Cartesian product. What is happening? That each person is being shown in each department. You can see here, Adam is clerk, it is being shown as the operation department. Adam is clerk, it is being shown in the sales department as well. Adam is clerk, it is being on research. Adam or clerk, it is on the accounting department as well. Same is happening with the gems. It is being shown on the all the departments. Ford, it is being shown on all the department. Same thing. Okay. So that is what is cross join. How can you achieve the cross join? There are two syntax. One is select whatever the columns you want from first table, cross join another table. The most important thing, don't give any criteria for the joining. Okay, so the column that is the common, it is not being given. So if you like to have the cross join without this syntax cross join, then how can you do? From EMP comma DPT, nothing else. Okay, so this is cross join. First syntax is this, the simplest syntax. Without this, what I'm telling is it is not SQL, sorry, ANSI SQL. It is the simple syntax, and other is the ANSI syntax, cross join. If you give the joining criteria, then it will become plain simple inner join. I hope everyone understood it. ठीक है? अगर आपने ज्वाइन के बाद क्राइटेरिया दे दिया, कॉमन जो फील्ड था उसका नाम दे दिया, तो ये क्रॉस ज्वाइन प्लेन सिंपल इनर ज्वाइन में कन्वर्ट हो जाएगा. Is it clear to everybody? I hope. Any question? Anybody have any question regarding cross join? I hope everyone understood it. It's very easy. You know, there is another word for that. It is called Cartesian product. And next join that I would like to discuss is outer join. Okay. So outer join is, what is the meaning of outer join? So there are two type of outer join, left outer join and another one is called the right outer join. So how we achieve this outer join? Okay, just see. Yeah, just a minute.
Okay, so let me do outer join. So before understanding the outer join, just see the uh, record in our table. So select asterisk from EMP. So there are department number 10, 20, and 30 only. And select asterisk from DPT. So you see there is one department number 40, there is no employee in it. If you want to join, what will happen? What is happening till now? We are just joining those employee which are in department number 10, 20, and 30. I just want to join this two table where this department number 40 also comes in output. Then what will happen in that case? What will happen in that case? That from here to here, यहाँ पर हमने डिपार्टमेंट लगाया है, वहां पर क्या होगा, ये वाला इंफॉर्मेशन तो रहेगा, पर दिस साइड क्या हो जाएगा, नल हो जाएगा. दैट इज व्हाट वी वांट. लेकिन अभी तक जो भी ज्वाइन कर रहे हैं, ये सिर्फ कॉमन वाले को कर रहा है, जहां पर बोथ थिंग्स आर मैचिंग. सो दिस 40 इज नॉट मैचिंग. सो आउटर ज्वाइन क्या करता है, ये जो नॉन मैचिंग वाला है उसको भी आउटपुट में ले आ जाता है. ठीक है. सो ओके, सो कैसे इसको आउटर ज्वाइन करेंगे, जस्ट सी द सिंटैक्स. I just want to select few things like ename, then job, and ठीक है, ये ले लेता हूँ उधर से, और ले लेता हूँ डिपार्टमेंट नंबर से डिपार्टमेंट नेम और लोकेशन ले लेता हूँ. ठीक है. सो डी नेम एंड lock from emp लेफ्ट आउटर ज्वाइन. पहले लेफ्ट करते हैं, पहले लेफ्ट. If you write left outer join or you write left join, both are the same thing. Okay, so left join, the second table is dpt on will be always be there. So on emp dot dptano equal to dpt dot dptano. डिपार्टमेंट नंबर भी प्रिंट कर लेंगे, अच्छा रहेगा. सो वी वांट डिपार्टमेंट नंबर आल्सो. dpt number will create problems. So emp dot dptno on this side, and dpt dot dptno on that side. Okay, so you can see there is no 40 is coming. Okay, now instead of doing left, I'm doing right. Now you see here the difference. अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, इधर नल आ रहा है, इधर 40 आ रही है. दिस इज आउटर ज्वाइन. ठीक है, आई होप सबको दिख रहा है क्या हो गया आउटर ज्वाइन में. आउटर ज्वाइन में वो वाला कॉलम भी वो वाला रो भी आने लगा जिसका मैचिंग नहीं था. ठीक है, तो डिपार्टमेंट नंबर 40, डिपार्टमेंट नाम
operation was there, but there was no employee in department number 40 in employee. सो प्रीवियस कमांड में क्या हो रहा था, सिर्फ जो मैचिंग थे वो आ रहे थे, 40 की तरफ भी नहीं आ रहा था। यहाँ पर क्या हो गया, ये 40 इधर आ गया। सो दिस इज आउटर ज्वाइन। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज लेफ्ट एंड व्हाट राइट। ठीक है, इसको हमने लेफ्ट किया तो नहीं आउटपुट आया, लेफ्ट किया तो आउटपुट इक्वल था, और राइट किया तो आउटपुट आने लगा। सो यू सी इट इज नथिंग डिफरेंट, लेफ्ट और राइट एक ही चीज होता है। सिर्फ आपको रखना है कि आपने ज्वाइन किसको किया। तो आप देखो ईएमपी को किया है डीपीटी से, ठीक है, ईएमपी को किया है डीपीटी से, ठीक है। तो ईएमपी इधर वाला जो है पहले जो है ईएमपी, और इधर रखा है आपने डीपीटी को, तब आपने क्या करना पड़ा है, राइट, राइट का आउटर, किसका, राइट का आउटर, ईएमपी साइड में जो नहीं है वो आ रहा है। यही आउटपुट के लिए वी कैन डू वन मोर थिंग, हम क्या कर सकते हैं कि ये राइट को बना दूंगा लेफ्ट, ठीक है, और इधर जो ईएमपी है इसको बना दूंगा पहले डीपीटी, और इधर कर दूंगा, इधर चेक ईएमपी, सॉरी ईएमपी, नो यू हैव द सेम आउटपुट। ठीक है, तो लेफ्ट और राइट इज नथिंग बट कि आपने किस टेबल को लेफ्ट में रखा है, किस टेबल को राइट में रखा है। ठीक है, यू हैव द सेम आउटपुट। इज इट क्लियर? आई होप, है ना। यही होता है लेफ्ट और राइट आउटर ज्वाइन, दोनों एक है, दोनों एक है। बस डिफरेंस क्या है कि जब आप लेफ्ट रखेंगे तो किसमें एक्स्ट्रा है, किसमें आउटर है, किसमें एक्स्ट्रा है, लेफ्ट में एक्स्ट्रा है या राइट में एक्स्ट्रा है। ऑब्वियसली डीपीटी लेफ्ट में है, इसमें एक्स्ट्रा है। अगर हम राइट वाला करके अगर क्वेरी लिखा था हमने, तो यू सी किसमें एक्स्ट्रा है, राइट हमने लगाया, राइट में किसको लिखा है, डीपीटी को लिखा है। किधर एक्स्ट्रा है, डीपीटी साइड में एक्स्ट्रा है, तो हमने लिख दिया राइट। और यहाँ पर हमने डीपीटी इधर लिखा है तो हमने लिख दिया लेफ्ट। सो दिस इज आउटर ज्वाइन, वेरी सिंपल। आई होप एवरीवन कैन अंडरस्टैंड क्या किया हमने। एनीवन एनी क्वेरी? आउटर जॉइन समझ गए क्या होता है, लेफ्ट एंड राइट क्या होता है? देयर इज नो सेपरेट, कोई अलग चीज नहीं है लेफ्ट ज्वाइन और राइट ज्वाइन। सिंपली है कि आपने ज्वाइन के लेफ्ट साइड में और राइट साइड में किस टेबल का नाम लिखा। अगर आप प्रॉपरली आप ये क्वेरी रखेंगे लेफ्ट और राइट को, यू विल गेट द आउटपुट। अगर ये इसको अगर राइट के जगह लेफ्ट कर दिए होते तो ये आप नहीं बता पाते कि किधर मुझे ज्यादा चाहिए। तो क्या होता, जो इक्वी ज्वाइन है वो वैसे काम करता। ठीक है, इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? आई होप। Just put in chat if anyone has any doubt. Otherwise, I hope you will understand what is the outer join. So there is one more outer join. This is called the full outer join, and MySQL doesn't support it. ठीक है, MySQL में फुल आउटर ज्वाइन नहीं होता है। फुल आउटर ज्वाइन क्या है, यहाँ पर हमें देखना पड़ा कि किधर किसको लेफ्ट में रखेंगे और किसको राइट में रखेंगे। फुल आउटर ज्वाइन अगर यहाँ पर लगा देते तो लेफ्ट राइट वाला हम कुछ भी लिख देते, ये रन करता। सो इट इज नॉट ए वेरी एनी पावरफुल इनहेंसमेंट ओवर, इट इज जस्ट सिंप्लिसिटी, है ना, जस्ट थोड़ा सा काम को आपका आसान कर देता है कि आपको लेफ्ट और राइट को यहाँ पर प्रॉपरली ध्यान से नहीं लगाना पड़ता है। सिंपली लिख दिया फुल ऑटर ज्वाइन, लेफ्ट का होगा तो लेफ्ट में ले लेगा, राइट का होगा तो राइट दिखा देगा, दोनों को कर देगा। माई स्किल में फुल आउटर ज्वाइन नहीं होता है। ठीक है, तो माई स्किल में अगर आप फुल आउटर ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। लेफ्ट आउटर ज्वाइन और फुल आउटर ज्वाइन का एक यूनियन क्वेरी बनाएंगे, देन यू कैन सिमुलेट इट। बट इफ यू आर नोइंग कि कौन से टेबल में ज्यादा है, तो यू जस्ट ट्राई इट वंस, देयर इज नो नीड फॉर दैट। इससे आपका कोई इट इज नॉट एनी शॉर्टकमिंग्स देयर इन माई स्क्वेल। ओके, so full outer join is not supported, but it is not makes any problem. You can get what you want. Okay, so I hope that all the join type I have covered. There was one
One, anything is left? No, I hope. So joins are over. I have just gone through all the joins. Now, after joins, I just want to do some aggregation. Okay, very, very powerful thing is the aggregate that I want to follow. ठीक है, aggregate query करने जा रहे हैं. Aggregate query क्या होती है? I just want to know how many clerks are there in each department. डिपार्टमेंट नंबर 10 में, 20 में, 30 में, 40 में कितने क्लर्क हैं. I just want to know how many people work in each city. I just want to know how much salary is being spent on each job or each department number or each location. So what we have to do, you have to do some sum. ठीक है, आप ये find out करना चाहते हैं what is the highest salary in each department. You want to do some max like things. So the functions here with that we will be using count, max, min और average भी होता है, average और std भी होता है, standard deviation. These functions are aggregate functions. Okay, so let's see how we use these functions. So that we are going to do is aggregate query. Sure. So just I want to go through the पूरे employee वाले टेबल को एक बार फिर से देख लेते हैं पहले. Select asterisk of select all from EMP. Sorry, from EMP. I just want to see department wise how many people are there. Okay. Select DPTNO. And what I want, I just want to count. Count. The syntax is you don't write any specific column here, just write asterisk. Okay. Count asterisk from EMP. This query is wrong. Okay. Because it's showing any particular department, it is showing any table, any 14. I just want separately. Okay. So you have to use one thing, one keyword here, group by. Group by what? I want group by department number. DPTNO. And here you are. ठीक है, क्या हो रहा है, किस डिपार्टमेंट में कितने रो हैं, जितने रो हैं उतने एम्प्लॉई होंगे. सिंपल. ओके. So department number and count as D. What about looking at some table that are some bigger in size, है ना, कुछ बड़े टेबल के ऊपर ये काम करते हैं. Let's have employee. I have a big table HR. मैं इसमें देखना चाहता हूँ. Countries, department, employees. Lot of employees are there. तो इसको यूज करेंगे HR को. Okay. Just want the some bigger table here. Okay. We can write command anywhere. We can right now I am using SQL prompt. Now just write some query here. तो यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर प्लस करना है, एक ब्लैंक फाइल खुल जाएगी, यूज HR. ठीक है, ये इफ यू रिमेंबर जिस डेटाबेस को यूज करना है उसमें यूज लगाते हैं. ठीक है. सो व्हाट आर द टेबल्स अवेलेबल हियर, वी कैन सी कौन कौन से टेबल हैं. शो tables. I just want to run this one.
So country, department. I just want to see the employee table here. So select output is better here. हाँ यहाँ पर देखने में easy होता है. So why not we come back to our black and white TV. Okay. Uh, use HR. Use HR. Uh, so tables. I just want to query this employee. Okay, just see. I just want to describe it because what columns are there, I don't remember. So I have to describe it first. EMPLOYEES. Employee ID, first name, last name, email, phone number, hire date, job ID, salary, commission percent, manager ID, department ID. Now, uh, department ID. Oh, department name is not there. Okay, ठीक है. कुछ ऐसा ही टेबल है, but it has more record. जरा एक बार select करके देखता हूँ. आदत पड़ गई है. EMP ज़्यादा यूज कर रहा हूँ. So I will be using employee EMP. LOYEES. Okay. स्पेलिंग रॉन्ग होगा और कोई बात नहीं है. सेलेक्ट स्ट्रिंग फ्रॉम EMPLOYEES. देयर आर 200 एम्प्लॉइज. फर्स्ट नेम लास्ट नेम. थोड़ा सा ऊपर आके देखता हूँ, सबके फील्ड दिखेंगे. ओके. फर्स्ट नेम लास्ट नेम ईमेल फोन नंबर हायर डेट जॉब आईडी. जॉब आईडी थोड़ा अलग टाइप का है. ठीक है, जॉब का नाम नहीं है, जॉब की आईडी है. एडी प्रेसिडेंट, एडी वीपी, वाइस प्रेसिडेंट, आईटी प्रोग्रामर, एफआई अकाउंट्स समथिंग. सैलरी है, कमीशन का परसेंटेज है, मैनेजर का आईडी है जस्ट लाइक कमिंग फ्रॉम हियर, और ये डिपार्टमेंट का आईडी है. नाउ यू सी हाउ मेनी एम्प्लॉइज आर देयर इन ईच डिपार्टमेंट. ठीक है. सो ये थोड़ा सा ज़्यादा मीनिंगफुल क्वेरी लगेगा बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ records here, but every time you have to remember. Just a minute. कि क्या क्या फील्ड का नाम था. So I will write a query somewhere else and then I will put, because I just want everything to in front of me. Okay. What I am doing simply, ये जो ये सारे फील्ड थे, इसको मैं कॉपी कर ले रहा हूँ. आई एम जस्ट सिंपली राइटिंग इट हियर. सो सारे फील्ड हमेशा हमें याद रहे, है ना, और कोई बात नहीं है. ओके. चलो यही वाला क्वेरी अभी यूज करेंगे. बट देर आर लॉट ऑफ सैलरी है, जॉब आईडी है. आई एम जस्ट रिमूविंग द. मुझे क्या चाहिए, सारे नाम चाहिए और कुछ नहीं, है ना. बिकॉज द नेम हैज अंडरस्कोर एंड ऑल दिस थिंग. सो एट द राइट टाइम ऑफ राइटिंग द क्वेरी वो गलत ना हो जाए. दैट इज ऑल. बट देर आर लॉट ऑफ देम. तो क्या करूँ, एंटर कर देता हूँ. ठीक है, अब याद रहेगा. So I just want to do how many employees are there in each department. So my query will be select uh, department ID, select department ID, comma, count asterisk, count
asterisk uh, from the table name is, what is the table name? Employees. The table name is employees. Okay. So for the reference, all the fields are here. I'm just coming back and just putting this on my prompt. So we are querying a bit larger database. Department ID, count asterisk from department. Okay, no problem. What we have missing is group by. Okay, group by this department ID. So you see here, there is one department ID that is null. Okay, there is one department ID that is null. ऐसा भी है, एक एम्प्लॉय है, उसको अभी कोई डिपार्टमेंट असाइन नहीं हुआ है. सो वी आर गेटिंग इट. ऐसा भी एक एम्प्लॉय है यहाँ पर, एंड वी आर गेटिंग ऑल द थिंग. अब इसको बोले कि डिपार्टमेंट में एम्प्लॉय के साथ हम ये भी फाइंड आउट करना चाहते हैं कि किस किस जॉब में कितने लोग हैं, है ना. तो जॉब के लिए यहाँ पर इफ यू सी, देयर इज अ देयर इज वन जॉब आईडी एज वेल. तो क्यों ना ये जॉब आईडी को भी इसके अंदर लगा देते हैं. ठीक है. So I will be just updating this and यहाँ पर लगा देता हूँ जॉब आईडी. तो मैं इसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी ग्रुप करना है तो ग्रुपिंग में उसको भी लगा देता हूँ. सो अब ये आ रहा है. ठीक है. डिपार्टमेंट आईडी 90, जॉब आईडी प्रेसिडेंट एक है, 90 में वाइस प्रेसिडेंट दो है, आईटी प्रोग्रामर डिपार्टमेंट नंबर. क्यों ना उसको ऑर्डर कर दे डिपार्टमेंट वाइज, है ना. यह तो काफी मिक्सअप लग रहा है. सो यहाँ पर एक और लगा देता हूँ, ऑर्डर बाय डिपार्टमेंट आईडी. ठीक है. when your table has a lot of field and lot of data, then the things will be a little complex, but it is, you can see department number 10 has only one job, that is advanced administrative assistant, if I reading it right. In department number 20 there are two jobs are there, mk man, marketing manager, it is not milkman, mk representative. Okay, so this clerk of different type. So I think everyone is getting what is the meaning of group by, है ना. हम कैसे ग्रुप कर सकते हैं. हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, काउंट एस्ट्रिक कर रहे हैं. ठीक है. काउंट कर रहे हैं, काउंट कर रहे हैं कि किस डिपार्टमेंट में कौन से जॉब के कितने लोग हैं, है ना. सो अब एक काम करता हूँ, जस्ट कमिंग बैक टू our EMP table because we are more familiar with that table. So हम इसको और भी यूज कर सकते हैं. ठीक है. सब सैलरी देखते हैं कि सैलरी का क्या सिचुएशन है, कैसे सैलरी जो है या अमाउंट जो है डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है. ठीक है. तो इसमें क्या क्या फील्ड है, इसमें सैलरी जैसा कोई न्यूमेरिक फील्ड है क्या. लेट्स चेक फर्स्ट. First name, last name, phone number. Yeah, there is a salary here also. ठीक है. So we can use the salary also here. ठीक है. कितनी सैलरी किस डिपार्टमेंट में दिया जा रहा है. चलो, तो क्या करना है, जस्ट डिपार्टमेंट आईडी, जॉब आईडी. ठीक है, इस क्वेरी को ऐसे ही रहने देता हूँ मैं. अब इस बार क्या करना है, सैलरी को सम करना है. छोटे वाले टेबल में करोगे तो चीजें थोड़ी सी इजीली समझ में आएगी, है ना. बट आई एम डूइंग इट वंस हियर एंड देन आई विल कम बैक टू द स्मॉलर टेबल जहां पर सारा डेटा समझ में आएगा. ठीक है. तो यहाँ पर अभी मुझे क्या चाहिए, सम ऑफ सैलरी, सम ऑफ सैल.
rest thing will remain the same. सेल नहीं है, सैलरी है ना? दैट इज वाई आई सेड इट इज द होल सैलरी. सो आप देख सकते हैं कि किस डिपार्टमेंट में किस जॉब पर कितनी सैलरी स्पेंड की जा रही है. ठीक है, यू कैन इवन इवन गेट द मैक्स एंड मिनिमम आल्सो. सम के साथ हमें क्या चाहिए? मैक्स सैलरी आल्सो चाहिए, मैक्स. आल्सो हमें मिनिमम सैलरी भी चाहिए. तो मिन और एवरेज सैलरी भी चाहिए. चलो एवरेज सैलरी भी ले लेता हूँ. और सैलरी का स्टैंडर्ड डेविएशन भी चाहिए, तो वो भी मिल जाएगा. तो पहले ये देख ले. सो यू कैन गेट इट कि ईच डिपार्टमेंट ईच जॉब में सम क्या है, मैक्स, बिकॉज देर इज ओनली वन प्रेसिडेंट देयर. तो यहाँ पर सम मैक्स मीन सब वही होगा, है ना? एवरेज भी वही होगा. ठीक है. यहाँ पर यू नो दैट वाइस प्रेसिडेंट दो थे. दैट इज वाई it is giving you the sum of 34 and the max of 17 and min of 17. Okay. So you can see how we are analyzing our data using the SQL queries. Is it clear to everybody? Anyone has any question? You would like to know the name of this department? हमें क्या करना पड़ेगा? Join करना पड़ेगा. So syntax will remain same. Syntax में कोई difference नहीं है. Only you have to give the name of the table and the field that are common. ठीक है. So when you have a so there is a small tip. When you have a large table, large database, तो क्या करते हैं कि जितने भी टेबल होते हैं और उसमें जो भी फील्ड होते हैं उसको आप सामने एक प्रिंट करके रख लेते हैं. ठीक है. सो दैट यू ऑलवेज रिमेंबर व्हाट आर द टेबल नेम, व्हाट आर द फील्ड नेम. अदरवाइज जस्ट by remembering it will be very very difficult. So that is why I am using emp and dpt table, because the number of columns are very less there. So we are very much familiar with the data, so it becomes easy to write the query. Demonstrate करना आसान है, लेकिन थोड़ा लार्जर लेंगे तो हमें सारे फील्ड के नाम हमारे फ्रंट में होने चाहिए. अदरवाइज वी हैव टू गो बैक एंड फोर्थ and just check all those things. If you work in this MySQL workbench, then things will be a little bit easy. क्यों easy होगा? क्योंकि यहाँ पर कुछ कोड कंप्लीशन हो जाता है. ठीक है. सो जैसे अभी करना है सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम. अभी हम यूज कर रहे हैं एचआर को, है ना? एचआर फ्रॉम एचआर डॉट. देखिए अपने आप आने लगा, है ना? एचआर डॉट टेबल का नाम आने लगा. तो आई जस्ट वांट एचआर डॉट एम्प्लॉय. ठीक है. सेलेक्ट स्ट्रिक फ्रॉम. सो यहाँ पर थोड़ा सा वर्क आपका आसान हो जाता है. जस्ट सेलेक्ट दिस एंड रन इट. सो यू आर गेटिंग इट, है ना? उसी तरह अगर आप यहाँ पर जो हमने अभी क्वेरी रन की थी प्रीवियस वाला काउंट वाला, उसको भी यहाँ पर यूज करता हूँ. सेलेक्ट अपने टेबल का नाम दे देने पर वो आने लगेगा, है ना? तो सेलेक्ट एच आर डॉट आ गया. एच आर डॉट हमें क्या चाहिए? एच आर डॉट नहीं, सॉरी, टेबल का नाम देना है ना? तो सेलेक्ट ई एम पी एल ओ वाई ई इज एम्प्लॉयज डॉट, फील्ड का नाम आएगा, टेबल का नाम आता है. ठीक है. एम्प्लॉयज डॉट. ठीक है. यहाँ पर तो आउटपुट है ना, एम्प्लॉय आईडी.
employee underscore id. और क्या चाहिए? count, we want count asterisk from HR dot employees. Employees dot employee id count asterisk from हमें क्या चाहिए? from टेबल का नाम क्या है? एम्प्लॉयज. पूरा नाम दे सकते हैं, ठीक है? HR dot employees. Do you have any error? Then it will show you. ठीक है, इसको हमने सेलेक्ट कर लिया. इफ इट इज से कि एरर होगा तो यहाँ पर लिखेगा कोई फील्ड का नाम गलत है. सेलेक्ट EMPLOY employees dot employee ID. तो ये याद रखना पड़ेगा कि if everything is okay or not, है ना? So always the thing is there. आपको टेबल का सारा फील्ड या सब कुछ आपके सामने होना चाहिए. दैट इज द पॉइंट टू नो बी नोटेड हियर. ठीक है, चलो. सो वी विल बी डूइंग द सेम थिंग अगेन बट विद द our old known table here, the EMP, because we know everything in our fingertip. Select DPTNO, then some cell min cell comma max cell, you want average avg cell from EMP. I have changed the table, so I have to use my table name, my database name, sorry. Use, now this will work. Okay, select department number. Now it is giving one output. It means what is left, हमें क्या करना है? Group by करना है. So whenever you are using aggregate function, you have to use group by. और group by में क्या डालना है? जिसका आप aggregate नहीं कर रहे हैं. तो हमें किसके वाइज चाहिए? डिपार्टमेंट नंबर के वाइज चाहिए. तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? ग्रुप बाय DPT, नो डिपार्टमेंट नंबर, ग्रुप बाय सो एवरी डिपार्टमेंट का सम मैक्सिमम मिनिमम आ गया. अब इसमें आप जॉब भी लगाना चाहते हैं तो जॉब भी लगा सकते हैं. डिपार्टमेंट नंबर जैसा हमने पिछले बार किया था HR के साथ. तो जॉब का भी ग्रुपिंग चाहते हैं तो ग्रुप में यहाँ पर जॉब भी लगा दें. ओके, सो हियर यू आर. सो इफ यू वांट टू ऑर्डर बाई, आप यहाँ पर ऑर्डर बाई कर लीजिए. ठीक है, ORDER order. I want order by department number DPT now. So here you are. ठीक है, so I hope everyone has got it कि aggregate query क्या होती है. ठीक है, we are getting the summary. हम ज्वाइन भी कर सकते हैं टेबल का एग्रीगेट करने के लिए. जैसे हमें चाहिए था लोकेशन वाइज, लोकेशन का नाम और सैलरी का सम चाहिए था, तो विकट हम क्या कर सकते थे? ज्वाइन करने के बाद उसको लगा सकते थे. आई होप आई विल बी डूइंग इट अगेन tomorrow. So the time is almost up. I hope that everyone have a little idea of two things that we have done. Extra thing that we have done, that the outer query and the cross join, outer join and cross join, and these are the, this is called the aggregate functions. Okay, so I hope that this session was useful to you, all of you. So I'm just signing off with this session. Okay, thanks for joining.